startup, when they go, they will say like, I'm using the AI, and it's fine. Like It's buzzword. But actively revenue making company. Oh wow. ये Yeah. कैसे? First company 3 years to make revenue and profit, but oh wow, within few months. So hello everyone, आज फिर से हम हैं in Bay Area with the founder of two companies. One Sell It and See, जिसका yearly revenue है $7.5 million a year. That also from India. इन्होंने अपना move किया from India with that company's valuation and started a new company called OWOW in the US, and we will get to learn how he made it possible. We'll get to know all about the journey, what it takes to be an entrepreneur in Bay Area and how to be an entrepreneur in Bay Area. So start करते हैं with your introduction. So hi Gangesh, can you please introduce yourself? So my name is Gangesh Pathak, and I am founder of OWOW and Seltency. So Seltency was my first company. I started back in 2017, and OWOW we recently started. Like we started building last year, and we launched this month itself. So it's like we help companies to hire talent globally, anywhere on the earth. जिनको नहीं पता, OWOW का MRR अभी लास्ट ईयर कुछ महीनों पहले लॉन्च हुई थी. It already has MRR of monthly recurring revenue is 40K. 40K. Yeah. So we started building last year, and last month we launched it actually. So we have 8 paying customer from United States. So last month you launched it and you already reached monthly MRR, monthly recurring revenue of 40K a month, 400K a year. Yeah, कैसे? Approximately. That is amazing. Before knowing about current, let's start with your beginning. तो आपने entrepreneurship India में start की in 2017. Yes. What was the backstory? कैसे, क्यों, कब? So basically, I started when I was in my undergrad. So it was third year of my undergraduation. My background is electrical and electronics engineering, and at that time, most of sales and marketing domain was very traditional, in India especially. In third year, we thought to start Seltency. My background was electrical and electronics engineering, but my co-founder was from similar domain, like marketing, sales, BD, like that. So then we started Seltency. That was in 2017, and we raised it to this year we did almost $7.5 million, and it was mainly focused in B2B marketing and sales support domain. Now we have expanded it as a global sales and marketing company, and we are in India, we are in Philippines, we are in United States. अब Sell It and See के लिए what it took to reach that mark. So can you share the initial story and idea, how you got that idea of creating that company? Who inspired you? Yes, so to be honest, my background was different, electrical, electronics, but I was the first time, when in my university they started what we say, ये क्या होता है, campus placement. So the Capgemini they came to our university, and they didn't even allow me to sit into campus placement because there is gap, so they don't allow that, and that's fine. So I thought what to do. So then we started this Seltency. I thought I'll try to do something, and I look for what are the opportunities available, and it is more agency model. So initially it's easy for you to start an agency. So we started as a small boutique marketing agency, you can say, in Ghaziabad. And for agency, you don't need lots of fund to start. So we just started that. We looked for our area of expertise and all, and it was in B2B marketing domain. So we started in Ghaziabad, then we scaled it up. We then headquartered it in Noida. Currently we are headquartered in Noida. And last year, we expanded to Philippines, and even this United States also. कहना तो बहुत आसान है कि you reach 7.5 million revenue and huge profits without any funding, right? It is completely bootstrap. Bootstrap. Yeah. We didn't without any funding. Yeah. कहना आसान है, but
the amount of torture you took to make it possible. मैं torture इसका मैं कह रहा हूँ because I went to Jensen Huang's talk. आप वहाँ पे थे, Stripe sessions. So over there, Jensen Huang said that I wish you all the best to torture yourself to excellence to build something, because he thinks that passion doesn't mean you will be happy all the time. You have to torture yourself to excellence. So do you agree with that? Completely. So Actually, I'm fan of Jensen, NVIDIA CEO, and I really like in his Stripe session. So that's true. My family background is not it's like normal middle class family, you can say. So when I came to Delhi NCR basically, and when we thought to start this, so we really didn't have any money to start that, to be honest. And आप ऐसे समझ लो कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, हम लोगों ने जब पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सो व्हेन वी साइंड अप एंड वी कैलकुलेटेड, ओके साइन तो कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, पैसे आने वाले हैं, कितने आएंगे, हम लोगों ने जो भी कैलकुलेट किया था, एंड इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. बट वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, फर्स्ट वाला ही. एंड ही वॉज लाइक, हम लोगों ने जो एम्प्लॉयज़ रखे, ऑफिस लिए थे, जो स्टार्टिंग वाला छोटा ऑफिस था, सो उसमें हम लोगों को फर्स्ट मंथ में इवन 30-40 डेज हुए थे हम लोगों को स्टार्ट हुए, इट वॉज ए लॉस फॉर अस. लगभग हम लोगों ने 3-4 लाख रुपए ऐसे लॉस में थे हम लोग. एंड इवन उसमें जब हम लोग उस समय स्टार्ट कर रहे थे, सो वी थॉट आइदर वी क्लोज इट डाउन और वी गो एंड सेल. एंड मेरा बैकग्राउंड सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्टार्टिंग से रहा है, सो वी थॉट इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लोजिंग इट डाउन, let's go and make a sale. And we were we used to visit the events, we actively network with the people. Even मैं उस टाइम पे LinkedIn चलाता था, 12-1 बजे रात को मैसेज कर रहा हूँ सबको, रीच आउट कर रहा हूँ जस्ट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग. एंड somehow वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, we managed to pay those debts. And but लास्ट के स्टार्टिंग के 1-2 साल it was quite tough, and it will be for anyone who is starting up. So ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि हाँ आज स्टार्ट किया कल पैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है. It takes at least 3 years of time if you want to build something. So 3 साल 4 साल, and then you can easily scale it up. पर आपके सेकंड स्टार्टअप ने, ओवाओ ने उसी आर्गुमेंट को बीट कर दिया, बिकॉज आपने तो कुछ ही महीनों में यू मेड अ एक्टिवली रेवेन्यू मेकिंग कंपनी. ओवाओ, ये कैसे? फर्स्ट कंपनी 3 years to make revenue and profit, but oh wow, within few months. हाँ, so अब ओवाओ को देखोगे, so it's अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. बट बैकग्राउंड देखोगे, माई बैकग्राउंड, आई नो कि इस डोमेन में पिन पॉइंट्स क्या है, या मेरी स्किल्स, या मेरे को फाउंडर्स वगैरह की उनकी स्किल्स, दे नो हाउ टू सेल, दे नो हाउ टू बिल्ड द प्रोडक्ट. सो नाउ वी आर मेच्योर इनफ. एंड जो फर्स्ट वाला सेल्टेंसी था, तो इट वाज लाइक वी वर कॉलेज स्टूडेंट एंड वी स्टार्टेड दैट. सो मेरा बैकग्राउंड, रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म जो हम लोगों के पास है ओवाओ के लिए, वी हैव सफिशिएंट, एंड वी न्यू व्हाट टू डू. एट दैट मोमेंट वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि करना क्या है, कैसे करना है. सो वी वर लर्निंग फेज, सो लाइक दैट. तो अब आप इन द वैली, यू आर सराउंडेड बाय फंडिंग कंपनीज एवरीवेयर, वेंचर कैपिटलिस्ट, accelerator programs like YC. You're surrounded by funding everywhere. So आपने ओवाओ के लिए, have you thought of talking to them, giving or pitching your idea to them to get support? Yes. Because the network they provide is priceless. That's very much correct. And see, figure out कि आपको किस डोमेन में जाना है. And now we have bootstrapped already. And now we are ready for the raising funds and all. So this month itself we did an event जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च भी किया था April 6 को. And we started raising fund, 300K we are raising. That is from friends, family and angel investors. For OWOW?
For OVAV, yeah. Oh, nice. So yeah, that's we are raising. Later on, we are planning to go for VCs and all. We are not going to accelerator at this moment. Yeah. Why though? Why you not planning to accelerate? Everyone recommends that. Like for example, YC takes 7% and gives you 500k. Yeah, that's true, and it depends on like आप ऐसे समझो कि अब ये फाउंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले जाना चाहता है अपने बिजनेस को. सो एज ए फाउंडर लाइक वी थ्री लाइक मी एंड माई को फाउंडर, सो we thought to raising from friends and family and angel investor instead of going to the accelerator is good, that's good, and you should go, but yeah, we are not planning to do that. Okay, US जितना मैंने देखा है फंडिंग उनको मिलती है who are going after the hype, चाहे blockchain हो, deep tech में, yeah, currently generative AI, or sometimes in the beginning it was .com, उसके बाद it was IoT. So do you agree with it? आई डू. इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ उन्हीं को मिलता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस होती है. लाइक नाउअडेज जनरेटिव एआई अगर आप जाओगे तो, क्योंकि उससे एफिशिएंसी है. सो आप ऐसे समझो कि द पर्सन या जो कंपनी अगर वो जनरेटिव एआई नहीं यूज़ कर रही है तो उसका कंपटीटर जो यूज़ कर रहा है वो बीट कर देगा. करेक्ट. चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो. So investor know, they have their own mindset कि हाँ if they are using generative AI या और भी जो deep techs वगैरह हैं, so उसमें they prefer to invest in those companies because उसमें operational efficiency ज़्यादा होती है and even like technology की advantage उनके पास होती है. तो आपने अपने स्टार्टअप में फंडिंग लेने के लिए VC से और एंजल इन्वेस्टर से did you integrate Gen AI? We have integrated and we really use that. So देखो इसमें बे एरिया में ऐसे like any startup when they go they will say like I'm using the AI and it's fine, like it's buzzword, but yeah it's buzzword and everyone is using that कि मैं use करता हूँ. आपने AI इंटीग्रेट करने के बाद फंडिंग की सोची कि पहले भी आप सोच रहे थे? No, there was a difference from day one because this is scalable business and we were very much prepared to go fast. That's why we are till now we have bootstrapped, but अब हम लोग सोच रहे हैं इसे we will raise the fund and we will move fast because we have to compete with, this is very competitive market by the way, so we have to compete with them, so that's why. So it's not like कि हम लोग generative AI सिर्फ फंडिंग के लिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग भी यूज़ करें, ऐसा नहीं है. सो वी आर रियली यूजिंग दैट एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस एक्चुअली. वी हैव ऑटोमेटेड द प्रोसेस फ्रॉम सोर्सिंग द टैलेंट, they get interviewed by our Gen AI tool, even all those other processes which is related to sourcing, hiring, and also we have automated that. Okay, now how big is your team? Because with the AI boom, many one-person companies are being created. काफी लोग सोलोप्रेन्योरशिप से बड़ी कंपनीज क्रिएट कर पा रहे हैं इन द वैली विद जस्ट यूजिंग एआई एज देयर पार्टनर. सो हाउ बिग इज योर टीम? We are now we are 15 people. That is our core team. 3 of us are co-founder. I am from sales, business development. Other are from technology and operations. And then we have a core team of engineering team or software engineers, machine learning engineers, like that, and even in HR team and business development. So we are 15 people. A big question will be with this team, with this funding, you made it to the US and watching this video, अगर किसी को अभी in this hype want to create the startup, enter the world of entrepreneurship, how can they take your learnings and enter the world of entrepreneurship? So इसमें ऐसे जिसे करना है जिसे जाना है स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, सो दे हैव देयर माइंडसेट ऑलरेडी. दे शुड हैव द मेंटालिटी ऑफ, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का है, उन्हें जाना है स्टार्टअप डोमेन में, सो दे हैव टू फिगर इट आउट. उनके पास आइडिया होना चाहिए एंड आइडिया से ज़्यादा उन्हें एग्जीक्यूशन करने आना चाहिए. सो इफ़ दे नो दोज थिंग्स सो दे कैन जस्ट स्टार्ट दैट. देखो ऐसा नहीं होता कि हाँ
स्टार्टिंग में एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जांपल सेल्टेंसी वी डिडंट thought for like we will make it a global marketing agency. It was like just a boutique bootstrap नहीं boutique marketing agency, छोटी सी agency, like we are doing like you know working for our clients and all, and it was mainly into B2B lead gen and all, which we were doing initially. But once you get into it, so you will understand कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग लाइक जो आपके ऑफरिंग्स है या प्रोडक्ट है या जो भी आप कर रहे हो, सो यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग, एंड उसके बाद आपको और सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे. सो पहले ऐसा नहीं कोई सोच के आएगा कि हाँ इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं. और स्पेशली आपने सेलिटेंसी को आपने ऐसे छोड़ के आए हो आप इंडिया में दैट इट्स रनिंग ऑन इट्स ओन, और देन यू क्रिएटिंग अ सेकंड कंपनी हियर. हाउ डिड दैट मैनेज? आप कैसे सेलिटेंसी को मैनेज करते हो इवन दो यू आर 90% ओनर ऑफ इट? सेल्टेंसी में छोड़ के नहीं आया हूँ, ऐसा नहीं है. स्टिल लाइक व्हेन आई केम हियर, सो मैं लगभग 4-4:30 बजे तक यहाँ के PST टाइम जोन में, मीन्स वहाँ समझ लो 5 बजे तब तक मैं काम करता था. एंड अभी भी मैं 1 बजे तक करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ. लाइक यू हैव टू मैनेज. अगर आप जा रहे हो, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मुझे 6 महीने मुझे प्लान करने में लगे कि अच्छा मुझे मूव करना है, वहाँ पे जाना है US में, सो कैसे कैसे होगा. सो आई डिड दैट एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड. जब मैं आया तो मैं 4-5 बजे तक करता था, फिर धीरे धीरे लाइक डेलीगेट करके टास्क वगैरह एंड टीम बिल्ड करके, सो देन लाइक I still do 12 बजे 1 बजे तक मैं करता हूँ. Like I used to manage, so I am very well connected with India team, Philippines team, and we do that. तो आप agree करते हो just like Jensen Huang says कि the moment he wakes up in the morning he thinks about work and works till he sleeps. If he is watching a movie, thinks about work, and when he's sleeping he thinks about work. When he's working, he's working. When he's not working, still working. That's what he said in a conference. आप agree करते हो? I do. I do. इसलिए कि like at least मुझे 8 साल हो गए like इस डोमेन में. He is like experienced enough. Like I think 31 years in entrepreneurship. $1 trillion company. So he knew more than like you know what I do. But मेरे perspective से I've been in this 8 years almost. So that's very much correct. अभी आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो. एंड बिकॉज जब आपका किसी चीज़ का पैसन होता है ना, जैसे आपका पैसन है जो आप कर रहे हो, सो यू आर स्टिल वर्किंग बट यू आर एंजॉइंग दैट. सो फॉर मी ऑल्सो आई एम यूज्ड टू इट, लाइक आई एम वर्किंग एंड या दैट्स ट्रू. नाउ ओवाव क्या करता है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? इसके 2 कस्टमर हैं, लाइक एक तो एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय, मीन्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मेनली हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे फोकस है. So for software engineer, like if they are looking for job, mainly for US companies, because very much focused here at this moment. जो US से बाहर है, right? इंडिया से जो है जैसे. हाँ, जो इंडिया में है, लैटिन अमेरिका में है और इवन US में भी है. So they can come and they can register on our platform, and they will get vetted, they will get certified. And once they are certified, so it will match with the relevant job from US companies to them. Oh, so it's like Upwork but full time. फुल टाइम. हाँ. So Upwork पे कोई फ्रीलांसर हायर करता है, आप फुल टाइम जॉब देते हो, कोई भी इंडिया से देख रहा हो तो आप आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू दे कैन अप्लाई एंड गेट प्लेस्ड इन अ यूएस कंपनी. अब यूएस कंपनी को क्या फायदा होता है? नाउ यूएस कंपनीज बेसिकली अभी क्या है कि लाइक दे लुक फॉर द स्टाफिंग एजेंसी एंड इट्स हार्ड लाइक यू नो वर्किंग विद देम. आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको पता नहीं है लाइक आपके एम्प्लॉय को कितना पे हो रहा है, और वो अंडर पेड है तो वो छोड़ के जाएगा जॉब आपका, वो चेंज करेगा. सो हम लोगों के साथ क्या है कि लाइक एम्प्लॉयर कैन कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, दे कैन लुक फॉर द वेटेड टैलेंट विच इज मैचिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड दे कैन हायर देम. एंड वंस दे हायर दे कैन मैनेज देयर पेरोल, कंप्लायंस एंड ऑल दोज थिंग्स थ्रू प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स चीपर. सो यूएस के लिए इट्स चीपर लेबर फ्रॉम इंडिया. And the difference is कि उनको staffing agency के through नहीं जाना पड़ता, because that is expensive. So US के लिए it's cheaper and engineers make more, right? More cut आप उनको देते हो. Correct. So like for US employer,
we reduce their cost almost like 1/3 of what they pay in United States. Wow. So लगभग wow, मेरी कंपनी का नाम so like उसमें 70-75% कॉस्ट कम हो जाती है बिकॉज डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह. Purchasing power parity. एंड बेस्ट पार्ट इज फॉर इंजीनियर, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है. लाइक जो अभी करंट उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल इंडिया में है जो भी एवरेज या जो भी उसकी सैलरी है, सो मे बी आप मान के चलो कि 40-50% लाइक एडिशनल उसे पे मिलता है. एंड हम लोग कमीशन नहीं लेते उसमें बीच में. इट्स लाइक वी चार्ज द एम्प्लॉयर, that is platform fee, and they know that's very transparent pricing at OVA. अब फैंसी वैंसी तो सब ठीक है. व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ रनिंग टू कंपनीज? लाइक नंबर वाइज सबको अच्छा लगता है कि आई एम मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यू सी? There are many, and अगर कोई भी किसी को इस डोमेन में जाना है सो दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस. क्योंकि देखने में सोशल मीडिया पे देखोगे ना, सो याच में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, ऐसा हवाई जा रहे हैं, हाँ कार लेके घूम रहे हैं बड़ी बड़ी. सो वो सारी चीज़ें हो सकता है कुछ सही है लेकिन सारी सही नहीं है. सो इसमें स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है कि लाइक आप बहुत सारा पैसा बनाने लगोगे अचानक से इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इट टेक्स टाइम एंड आई फील एटलीस्ट 10 years. 10 years. सो अगर आपको इस डोमेन में जाना है सो 10 साल के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो कि हमें 10 साल इस पे इन्वेस्ट करने, आपका वो टाइम. एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑन लाइक स्लीप. हाँ, स्लीप हो गया, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपको हैंग आउट करना है, सो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, कैसे करोगे? एंड रिलेशनशिप वो भी इम्पैक्ट होता है. वो भी इम्पैक्ट होता है. इवन लाइक समटाइम्स फैमिली रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज यू वोंट गेट दैट मच टाइम उसे मैनेज करने का, बैलेंस करने का, वो सारी चीज़ें. सो थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. बट हाँ, अगर आप 10 साल के लिए प्रिपेयर्ड हो सो देन कम इन टू इट. अगर नहीं हो सो इट्स नॉट रिकमेंडेड, स्टिल यू कैन डू इट. Very well said, Angesh. Thank you so much for your time. I wish you all the best for Sell It and See. Oh wow. And I hope everyone watching this video is inspired by his hard work and learned something from him.